the next part is regarding these 2 point groups we have discussed. Previous cis form was having the point group, that is C2 point group, and the trans Decalin, they are having C2H point group. Okay. Now with related regarding this C2H or C2 point group, there is a symmetry number concept. Symmetry number concept is how many times you can get the equivalent structure for this molecule via rotation or via reflection, you can say, whatever is the order of that. So depending on that, we have one term called as the symmetry number. The point group and the symmetry number. So once you'll classify the molecules in the respective point groups, the next task is to assign the symmetry number. As I told you, the symmetry number is the number of equivalent positions that you can get it while turning the molecule into the simple rotation. जितना भी rotations तुम्हारे, जो भी angle तुमने decide किया है, so while rotating through that angle, how many equivalent positions you can get it, that equivalent positions is nothing but the symmetry number. So now for the convenience purpose, what they have done, they have already assigned the symmetry numbers to the molecule. Okay, so now these are the point groups and their respective symmetry numbers they have already given. So these are some point groups, these are another point groups, और उसके सामने उसका symmetry number लिखा हुआ है. So now if you remember, हमने cis decalin पढ़ा. cis decalin का point group क्या था? C2. So C2 comes under CN category. And if it is coming under CN category, इसका symmetry number होगा N. That is 2. So cis Decalin can show 2 different equivalent positions while rotation about that symmetry axis. If you remember the second trans Decalin, uska point group kya tha? C2H. C2H also belongs to the same group, and that's why अगर तुम देखोगे उसका symmetry number जो है वो same है. Again, दोनों का symmetry number is 2. So we have the symmetry number for the cis Decalin as well as the trans Decalin, that is 2. Now this symmetry number, we are going to use it further for some calculation. हम molecule के properties पढ़ने वाले हैं. तो molecules के जब properties पढ़ोगे, that time you need this number. Right now just remember, the cis Decalin is having point group C2 and the trans Decalin is having the point group C2H. Therefore, both of them have the symmetry number, that is 2. Okay, so this was about the point group classification and the symmetry number regarding the cis and the trans Decalin. Now we'll talk about the different properties of the molecule. ये exam में question आएगा, like discuss the stereochemistry of the Decalin with respect to the following points. So the first point we're going to talk about it is the geometry. Now we know that this cis and the trans Decalin, they are containing the 2 cyclohexane ring. This is one cyclohexane ring and this is another cyclohexane ring. So both of these cyclohexane rings are present in the chair conformation. Okay, so if you remember the previous structure, see this, जितना भी हमने cis और trans Decalin ड्रॉ किया उसमें ये जो दोनों भी cyclohexane rings ड्रॉ किए, they were having the chair conformation, whether it is cis form or whether it is trans form. They are present in their chair conformation form because that is the most stable conformation we can expect for the cis and trans Decalin. So the first point that we are supposed to remember, the cis and the trans Decalin contains the cyclohexane units that is in the chair conformation. Now next part that we're going to talk is the torsional angle of junction. Okay, torsional angle of junction is, this is your bridgehead carbon atom, if you see. So this is your bridgehead carbon atom. Now the angle between these two bonds, like if I'll see the 4th carbon and the 1st carbon,
Okay, the fourth carbon and the first carbon, these are the bridges for this ring. And the fifth carbon and the eighth carbon, these are bridges for this ring. Okay, so now when I talk about this geometry across this bond, अगर तुम ये वाला bond देखोगे, यहाँ पे अगर मैं exactly draw करूंगी, अगर तुम ये वाला angle देखोगे, this angle, this angle, generally this is staggered bond, so ये गॉश एंगल बोलेंगे हम लोग इसको. गॉश एंगल जनरली 60 होता है, बट हमारे पास दो रिंग है एंड दो रिंग के फ्यूजन की वजह से एंगल थोड़ा स्ट्रेन हो जाता है एंड इट कम्स अराउंड 55 to 56. तो इसके पास टॉर्शनल एंगल ऑफ जंक्शन जो है वो है 55 to 56 डिग्री. व्हाट इज टॉर्शनल एंगल ऑफ जंक्शन? जंक्शन, ये रिंग और ये रिंग दोनों का जंक्शन कौन है? 9-10 कार्बन. तो दोनों रिंग के बीच में जो अक्रॉस द रिंग एटम्स है, इनके बीच में गॉश एंगल कितना है? दैट इज कॉल्ड एज द टॉर्शनल एंगल ऑफ जंक्शन. सो दैट इज फाउंड टू बी अराउंड 55 to 56 डिग्री. ये सिस और ट्रांस दोनों के लिए ही उतना ही है. ओके, now I'm going to talk about the most important concept. You just focus on this particular carbon, the middle carbon, the bridgehead carbon. We are going to talk about them. So now look at your bridgehead carbon. This is my 10th carbon. On the right hand side top, I have the 5th carbon. Bottom, I have hydrogen. And the left side top, I have 4th carbon. On the back side, I have 9th carbon. Back side 9th carbon. Front, top, I have the hydrogen. Right side down, I have 8th carbon. And left side down, I have the 1st carbon. So this is Newman projection of your bridgehead carbons. Okay. So now what we're going to see, we're going to talk about the concept whether these rings can undergo any kind of inversion, ring inversion. Two concepts we have discussed last time. That is, one is pseudo rotation and one is the ring inversion. So I'm talking about now ring inversion, ring flipping. Ring flipping will give me the structure which is not equivalent to the previous one. So flipping of the ring, we're going to find out whether it is possible or not. So just imagine, अगर ये मेरा hydrogen of 10th carbon है, ये hydrogen of 10th carbon, this is having axial position. तो अगर ये axial है तो ये दो equatorial हो गए. ओके, और अगर ये axial है 9th carbon का, तो ये दो जो कार्बन है वो इक्वेटोरियल हो गए. तो दैट मीन्स अगर तुम देखोगे अब यहाँ पे जो रिंग है 6 मेंबर्ड रिंग, वो फॉर्म हुआ है बिटवीन दिस 4th कार्बन एंड 9th कार्बन. ओके, एंड हियर द रिंग इज फॉर्म बिटवीन द 5th कार्बन एंड द 8th कार्बन. Okay, so these are the ring, these are the bridgehead carbons. These are the bridgehead carbons. So what is the bonding between the bridgehead carbon? Equatorial, equatorial. This is also equatorial, equatorial. So this structure is something which is formed or fused through the equatorial, equatorial bond. दोनों रिंग एक दूसरे से फ्यूज हुए हैं with the equatorial, equatorial bonds. Okay, now imagine if I'll change this particular structure. Okay, and what I'll do, I will keep the the back carbon as it is. See, the back carbon, हाइड्रोजन यहीं पे है, 8th कार्बन यहीं पे है और 1st कार्बन यहाँ पे है. और मैंने फर्स्ट जो फ्रंट कार्बन है उसको मैंने रोटेट किया, एंड रोटेशन करके आई एम जस्ट रोटेटिंग इट द क्लॉकवाइज. So what will happen? The hydrogen will come on the top, 4th carbon will go on the right side, and 5th carbon will come down. Okay, so this is the rotation which I'm getting. Now remember, ring किसके बीच में फॉर्म हुआ था? 4 और 1 के बीच में. Now look at the 4 and 1. वो कहाँ गए अभी? 4 and 1. It is almost like your transbutane unit. एंड अगर तुम ट्रांसब्यूटेन यूनिट देखोगे तो ये ब्रिजिंग डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया. इनके बीच में एंगल कितना था? गॉश एंगल विच इज अराउंड 55 to 56 डिग्री. अब ये एंगल कितना हो गया? अराउंड 180. एंड सिंस 55 का एंगल 180 पे इंक्रीज हो गया, डेफिनेटली दिस फ्यूजन इज नॉट पॉसिबल.
You can see the 4 and 8 are still nearby. They have still gauge angles. That's why this ring will remain as it is, but the other ring of the structure will break. So if this structure will undergo the flipping process, then one of the ring will remain as it is, but the one other ring will break. And that's why this flipping is not possible. You can try this structure in another way also. I have kept it backside carbon as it is. पहले मैंने उसको clockwise rotate किया था, अब मैंने उसको anti-clockwise rotate किया. The front carbon I have rotated anti-clockwise. So you can see hydrogen coming on the right side. Fifth carbon will come on the left side, and fourth carbon will come down. Again we can see this time ये जो ring है 1 और 4 के बीच में, that will remain as it is. But the ring between the fifth and the eighth carbon, they're experiencing the torsional angle of junction of 180, and that will cause the strain in the molecule, and this ring will break, which is clearly indicating that trans Decalin cannot undergo the ring inversion. Because it will try to undergo the ring inversion, the ring will break. Okay, जो बॉन्ड्स पहले इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल थे, यहाँ पे ये इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल है, अब एक दूसरे के केस में वो क्या हो गए, एक्शियल एक्शियल. दिस इज टर्निंग टू एक्शियल. ये एक्शियल बन गया, ये एक्शियल है. एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो एक्शियल है. पहले वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इक्वेटोरियल थे, अभी वो एक्शियल बन गए. सो इन शॉर्ट, थ्रू द रिंग इन्वर्जन द इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल बॉन्ड चेंजेस टू एक्शियल एक्शियल, as a result of which the molecule will experience the strain. One ring will break and the other ring will remain as it is. Okay, so for trans Decalin, the geometry of the molecule is the most rigid geometry. First point, what I explained, the cis and trans Decalin, both of them have their cyclohexane rings in the chair conformation form. Second point, I explain you the torsional angle of junction is 55 to 56 degree. And now the third point I have explained, the trans Decalin, if it undergoes the ring inversion process, the equatorial bond fusion will change to axial axial bond fusion. And as a result of which the ring will break. Hence, trans Decalin cannot undergo the ring inversion process. That's the most rigid structure. ओके, यहाँ पे और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि साइन ऑफ दिस टॉर्शनल एंगल. साइन कैसे डिसाइड करते हैं, तुम्हें देखना है कि फ्यूजन किसके बीच में है. फ्यूजन किसके बीच में है, 4 और 1. 4 और 1 आगे जाके फ्यूज होके यहाँ पे रिंग बनता है. तो हमें जाना है हमेशा फ्रंट कार्बन से लेके बैक कार्बन से तक. ये कॉन्सेप्ट जरा ठीक से सुनो, बिकॉज इसमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है. Again, I'm repeating. See, there is a fusion between fourth carbon and the first carbon. पहले तो हमें fusion किसके बीच में है वो देखना है. अब हमें क्या करना है, हमें एक circular arrow draw करना है, but the direction should be always front to top. अब ये तुम्हारा front carbon जो है वो fourth है और back carbon जो है first carbon है. Fourth carbon on the front and the first carbon on the back. So now when I'll draw that circular arrow, it will have this kind of location. ये तुम्हारा circular arrow है. अब ये circular arrow का अगर तुम direction देखोगे, it is anti-clockwise. And since it is anti-clockwise, this torsional angle is denoted by symbol psi, and the sign of this psi is minus because it is having the direction anti-clockwise. Now I'm talking about this side. See, there is a fusion between fifth carbon and eighth carbon. Okay, अब इन दोनों के बीच में हम arrow draw करेंगे. But जैसे मैंने बोला, तुम्हें कोई भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो नहीं करना. तुम्हें हमेशा फॉलो करना है टॉप से लेके बैक तक. तो टॉप कौन है, फिफ्थ कार्बन, एंड बैक कौन है, एट्थ. सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम फिफ्थ कार्बन and I will go to 8th carbon. So when I'll go this way, this is clockwise direction. And since it is clockwise, ये जो torsional angle है, हम इसको sign देंगे positive. So torsional angle have the sign always, that is negative or positive.
So that's why we give this is decided on the basis of this direction. ये जो circular arrow का जो notation या जो rules है हमें वो follow करना है to decide the sign of the torsional angle of junction. Now regarding the geometry, you can also write one point is that the trans Decalin is completely flat structure. Okay, completely flat because हमारे दो जो cyclohexane ring है एक linear fashion में एक दूसरे को attached है. Okay, it's a completely flat structure. अगर इसको compare करोगे with cis Decalin, it's having a folded structure, but this is completely flat structure. So when you want to comment about the stereochemistry with respect to the geometry of the transdecalin, first thing you will say, both the cyclohexane rings are chair conformation, torsion angle of junction of 55 to 56 degree. Transdecalin cannot undergo the ring inversion because it will experience the axial fusion, which have the larger bridging distance. And how to decide the sign of this torsion angle of junction. Torsion angle of junction for the transdecalin, always remember एक positive होता है और एक negative होता है, हमेशा ये याद रखो. And the transdecalin have the complete flat structure. Okay, now we'll talk about the next part, that is cis-decalin. Great. So now in the case of the geometry of the cis-decalin, first thing, same. Both the cyclohexane rings are present in the chair conformation form. Secondly, if you look at this torsion angle of junction, junction पे angle देखो, वापस उतना ही है, 55 to 56 degree. That has not changed. Again, the next part, this 55 to 56 degree. Again, I'm drawing this torsion angle of junction. यहाँ पे मैंने ये जो junction पे exactly Newman projection है वापस as it is draw किया. Look at this. 10th carbon as it is, right top 5th carbon, left top 4th carbon, and down कौन है? Axial hydrogen. Backside 9th carbon, we have 8th carbon backside, then hydrogen, and then equatorial position पे first carbon. अब यहाँ पे क्या हुआ? Previous trans से compare करोगे तो trans में proton यहाँ पे था, जो proton यहाँ पे चला गया, तो तुम्हारा 8th carbon बन गया axial और proton हो गया equatorial. So now what is happening? Fusion जो है, fusion किसके बीच में है? Fusion है between this 8th and the 5th carbon, and the fusion between first and the 4th carbon. ये ring बनाते हैं और ये ring बनाते हैं. अगर तुम इस fusion को देखोगे, there is a fusion of axial equatorial. If you remember in the transdecalin what we said, it was equatorial fusion. Here there is axial equatorial fusion. Okay, इसको भी axial equatorial बोलते हैं just because हम इस bond को axial consider करते हैं with respect to other. ये हाइड्रोजन्स को दोनों को ना इक्वेटोरियली कंसीडर किया जाता है, बट मैंने ये पर्पसली ड्रॉ किया, बट बिकॉज यू व्हेन यू सी एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ सिस डेकेलिन, अगर एक एक्सियल है तो दूसरा इक्वेटोरियल होता है. ओके, तो हियर द फ्यूजन बिटवीन द रिंग इज axial and equatorial. In transdecalin, the fusion is equatorial. In transdecalin, when it undergoes the ring inversion, the equatorial changes to axial, which causes the strain in the ring. अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, वापस हमने वही किया. See this, वापस हमने वही किया. फर्स्ट बैक साइड कार्बन हमने एज इट इज रखा, फ्रंट साइड कार्बन को हमने रोटेट किया. फर्स्ट वी हैव रोटेटेड क्लॉकवाइज. नाउ इफ यू सी द क्लॉकवाइज, वापस फ्यूजन किसके बीच में है? 8 और 4 के बीच में है, सॉरी 8 और 5 के बीच में है. There is fusion between 8 and 5 and 1 and 4. अगर तुम देखोगे ये फ्यूजन तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज इसका जो डायहेड्रल एंगल या टॉर्शनल एंगल ऑफ जंक्शन बोलोगे वो कितना हो गया? 180. ये दोनों के लिए पॉसिबल नहीं है, तो ये जो रोटेशन है ये पॉसिबल ही नहीं है मॉलिक्यूल के लिए. ओके, ये मैंने क्या रोटेट किया था? क्लॉकवाइज. नाउ आई विल ट्राई टू रोटेट एंटी क्लॉकवाइज. जब मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करूंगी, so again fusion is between 8 and 5 and 1 and 4. Now you can see these molecules still have the nearby vicinity and they can form the ring.
ये पॉसिबल नहीं था, बट एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेशन होगा तो रिंग इन्वर्जन पॉसिबल है फॉर द सिस डिकैलिन. So cis decalin can undergo the ring inversion because what is happening यहाँ पे कि जो भी एक्चुअल इक्वेटोरियल बॉन्ड था, अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे फोर्थ बॉन्ड जो था तुम्हारा इक्वेटोरियल था, जब उसका लोकेशन ये हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, एक्शियल बन जाएगा. सो इन शॉर्ट जो इक्वेटोरियल है वो एक्शियल बनता है और जो एक्शियल है वो इक्वेटोरियल बनता है. वही सिर्फ चेंज हो रहा है व्हेन यू आर रोटेटिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज. In transdecalin, equatorial change to axial. But in cisdecalin, axial equatorial is changing to equatorial axial. That's the only change. And still we have the Gauss angle of 55 to 56, as a result of which the ring can still be formed. And if the ring can still be formed, the ring inversion is possible. So how to show that kind of ring inversion? Ring inversion can be shown in this way. See, this is your first ring. इसका तुमने न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ किया था. अगर ये रिंग इन्वर्जन हो जाएगा, so I will get this ring. इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? Ninth carbon. Look at the ninth carbon, which was having the proton equatorial. रिंग इन्वर्जन के बाद 9 का प्रोटॉन हो गया एक्शियल. 10 का प्रोटॉन देखो क्या था, axial. After ring inversion, it is becoming equatorial. So cis can undergo the ring inversion, but trans cannot. So trans decalin is the rigid structure, whereas the cis decalin can undergo the ring inversion. In fact, ये जो two structures है, they are called as mirror images of each other. Exactly यहाँ पे नहीं दिख रहा है mirror images, but these are mirror images. इसको actually 3D view में देखोगे तो they are exactly the mirror images of each other, and that's why they say if this is my plus isomer, this is minus. They are optical isomers of each other. So to some extent the optical isomerism is seen in the case of cis decalin. तो ओवरऑल अगर मैं डेकैलिन स्ट्रक्चर पढ़ती हूँ तो डेकैलिन के एक्चुअली 3 स्ट्रक्चर्स है. व्हाट आर द 3 स्ट्रक्चर? Actually there are 2 geometrical isomers. One is cis decalin and one is trans decalin. And further the cis decalin is divided into 2 optical isomers. So there are total 3 isomers in the case of the decalin. 2 geometrical, and the cis is further converted into 2 optical isomers. Okay. Regarding the geometry of the cis decalin, it is having a flat structure, not the, sorry, it's having the folded structure, not the flat structure. Trans have the flat structure, this have the folded. ये folded structure जो है ना, इसमें और ज्यादा properties आगे हमें मिलने वाले हैं. ये folded structure बहुत important है इसका. अब यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव साइन करना है. के बीच में है, पहले 4 और 1 के बीच में है. तो मैं कैसे, कहां से कहां तक एरो ड्रॉ करूं? क्या बोला था मैंने? फ्रंट से बैक जाना है हमेशा. 4 से 1 अगर ड्रॉ करेंगे तो ये कौन सा एंगल हो गया, कौन सा डायरेक्शन? क्लॉकवाइज. सो द साइन विल बी नेगेटिव. ओके. अब इसके बीच में अब कैसे जाओगे? 5th to 8. 5th to 8. 8 to 5th नहीं जाना है, बिकॉज हमें फ्रंट टू बैक जाना है. तो 5th to 8. अगेन इसका साइन देखो, एंटी क्लॉकवाइज. सो अगेन इट इज माइनस. तुम्हें याद है ट्रांस में क्या था? एक माइनस था और दूसरा क्या था? प्लस था. प्लस. सिस में एक माइनस है, दूसरा भी माइनस ही होता है. ओके. अब जब तुम उसका जो इन्वर्जन फॉर्म है, ये तो तुम्हारा इन्वर्जन फॉर्म है ना उसका, अब ड्रॉ करो. अब बताओ इसके बीच में कहां से कहां जाओ? 1 जाओगे तो एंगल क्या हो गया? क्लॉकवाइज. तो ये प्लस हो गया. इसके बीच में 5 to 8, अगेन ये क्लॉकवाइज, ये वापस प्लस हो गया. तुम देख रहे हो इसको आइसोमर्स क्यों बोलते हैं? ये तुम्हारा निगेटिव साइन पूरा पॉजिटिव साइन हो गया. वेरस ट्रांसडेकैलिन में जो निगेटिव पॉजिटिव होता है वो पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा. मतलब जो निगेटिव एंगल है इन्वर्जन के बाद, इन्वर्जन अगर हुआ तो जो निगेटिव एंगल है वो पॉजिटिव एंगल हो जाएगा और वहीं पे वो रिंग ब्रेक हो जाएगा. Okay, so torsion angle of junction both are negative और both are of same sign. दोनों ring का जो angle of junction है they have the same sign. In case of transdecalin they have different sign, opposite sign.
So this is of cis decalin and that is of trans decalin. So this is about complete geometry of the molecule. We have discussed only about the geometry of the molecule. This I have just discussed with you. Torsion angle of junction. ओके ऑलरेडी ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ दोनों के बारे में. क्या है अभी मैंने क्या बोला था? दिस इज ऑफ योर, दिस इज विच स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर देख के ही बता सकते हो ये क्या है, सिस या ट्रांस है? सिस. सिस है. तुम्हें प्रोटॉन्स को देखना है हमेशा. प्रोटॉन सेम साइड पे या प्रोटॉन्स अपोजिट साइड पे. दिस इज सिस एंड दिस इज ट्रांसफॉर्म. ओके जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड बिटवीन द सिस आइदर ये दो एंगल जो है आइदर वो प्लस प्लस होंगे या फिर माइनस माइनस होंगे. ओके सो वैल्यू ऑफ द टॉर्शन एंगल ऑफ जंक्शन फॉर द सिस दे आर आइडेंटिकल इन साइन. ओके वैल्यूज जो है वो सेम रहेंगे. अगर ये 55 है तो ये भी 55 है, ये 56 है तो ये भी 56 है. मैग्नीट्यूड इज सेम, देयर इज नो चेंज इन मैग्नीट्यूड, but the sign of the two that matters depending on the geometry. So in case of cis both have the same sign and that's why they will always give you additive effect. What is the additive effect? Suppose इसका एंगल माइनस है एंड हमने क्या डिसाइड किया था कितना एंगल होगा इसका माइनस में 55. So minus 55 minus 55, so that will go to minus 110. That will give you additive effect. अगर ये दोनों प्लस है तो भी कितना हो गया 110. दे विल ऑलवेज गिव यू एडिटिव इफेक्ट. बट ट्रांस दोनों के साइन अपोजिट है तो अगर एक -55 है तो दूसरा +55 होगा. okay so this will always give you addition. That's indicating it is one of the in short one of the reason which is showing you that in case of the trans decalane when you have a ring inversion one of the ring undergoes the closing but the other ring breaks, while this ring will always show you the additive effect. They will have the fusion type of thing. अगर ये -110 था वो +110 हो जाएगा. यहाँ पे कोई वैल्यूज में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा बट यहाँ पे रिंग ब्रेक हो जाता है because we get the actual part. okay I'm going for the next property, that is entropy, because this is something related to the first part of today's lecture which we discussed. We discussed about the point group of the molecules. okay so if you remember the point group of the molecules, just a minute. Regarding the point group of the molecules for the cis structure, what we have discussed, cis का क्या था point group? 2 point group. okay और इसका क्या था? C2H. हमने symmetry number decide किया था. What was the symmetry number for this? 2. And 2. for this also the symmetry number is 2. This is something we are going to connect it to the entropy. Now why we need the entropy property? At the end of this all properties we are going to talk about the stability of the cis decalin and the trans decalin. okay अगर तुम stability wise जितने property अभी तक पढ़े उसको अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें इजीली अगर ये पता चल गया होगा कि ये तुम्हारा रिजिड स्ट्रक्चर है ट्रांस, but the cis undergoes the flipping one form to other form quickly because that kind of ring inversion is possible for it, and that's why this is not stable structure. Trans is the most stable structure. but हमें क्या करना है अभी पूरा जो आंसर, जब भी हम स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं स्टेबिलिटी is connected to the energy. हमें thermodynamics से पता चल गया है कि जब भी तुम्हें stability दिखाना है you always try to do the calculation from that thermodynamics. So we are going to talk about that thermodynamic concept to give the final theoretical proof for stability of this molecule, and that's why we are going to talk about this term entropy. Now for calculating this entropy we are going to use the formula. Entropy is denoted by symbol S. So delta S is equals to minus R ln sigma. okay now sigma is nothing but your symmetry number. okay so दोनों का symmetry number क्या है? 2 है, minus R. So when I'll put it here, so this is minus R ln 2.
ये सबको कैलकुलेशन आता है, R का वैल्यू 8.314. Okay, and ln to convert, that is log to the base e को log to the base 10 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 0.303. और ये पूरा कैलकुलेशन करोगे, सी this will be like 8.314 multiplied by 2.303, and log of 2 is 0.3010. So when you'll do all this calculation, you will get the answer minus 5.8 joule per Kelvin per mole. Okay, so since both of them have the same symmetry number, the entropy for this molecule is 5.8 minus 5.8, and for this also it is minus 5.8. But apart from this, there is one additional entropy is associated with the cis decalin. What is the additional entropy? See, एक structure का, ये एक structure का हमने जब calculate किया तो कितना मिला? minus 5.8. But we know that this structure undergoes flipping to other structure. लेकिन दूसरा जो structure हमें मिलता है flipping होने के बाद, वो भी तो इसी का mirror image है. और अगर इसी का मिरर इमेज है तो उसका भी सिमेट्री ऑपरेशन कितना होगा? C2 point group. And what will be the symmetry number? 2. And that's why this will have again additional entropy of minus 5.8. तो इसका जो टोटल है 11.6. Okay, इसका जो टोटल है that will be the entropy. Again I'm repeating why I have added 5.8, because this undergoes the flipping structure. Flipping के बाद हमें एक उसका isomer मिलता है, but वो isomer है उसका भी symmetry number 2 ही होगा, and that's why this cis decalin has the entropy of mixing which is again equals to the 5.8. So अगर तुम देखोगे, अगर मैंने cis और trans के बीच में difference count किया तो किसका एंट्रोपी ज्यादा है? cis का एंट्रोपी ज्यादा है. तो जिसका एंट्रोपी ज्यादा होता है, एंट्रोपी का मतलब क्या है? डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस. सो व्हेन यू हैव मोर एंट्रोपी, definitely that molecule is unstable compared to the this structure. So this entropy calculation is showing us that the trans decalin is comparatively rigid and stable structure compared to cis decalin. Calculation समझ में आया? हमने symmetry number find out किया 2. This is a formula, delta S is equal to minus R ln sigma. When you will put it in this, both have the equal entropy of 5.8, but this cis will have the additional 5.8 because it undergoes the flipping to give one more structure, which is isomeric form of it. That structure will also have the symmetry number 2, and that's why the additional energy of 5.8. In short, the difference between the two is 5.8. इसके पास 11.6 है, इसके पास 5.8, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ? 5.8. दैट्स द एनर्जी डिफरेंस. ये हमने थियोरेटिकली कैलकुलेट किया है. इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 5.8. बट एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखोगे तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है दैट इज शोइंग ओनली 2.3, which is suggesting the cis decalin जो है कंपैरेटिवली स्टेबल है. इतना भी नहीं, हमारा एक्चुअली कैलकुलेशन तुम्हारा दिखा रहा है 5.8, बट 2.3 दिखा रहा है. फ्लिपिंग हो रहा है, बट फ्लिपिंग में भी थोड़ा सा एनर्जी बैरियर है कहीं ना कहीं, तो इसलिए वो एनर्जी डिफरेंस कितना बता रहा है? एक्चुअल एनर्जी डिफरेंस कितना बता रहा है? एंट्रोपी डिफरेंस 2.3 बता रहा है. Okay, so 3 properties we have covered up for the stereochemistry of decalin. First, we spoke about the geometry. Then we have decided the torsional angle of junction. Uske sign deke humne wapas. And the third point was the entropy. And from this entropy calculation, how to decide the stability of the decalin. Okay, now I'm going